Hello friends, welcome to my channel. I'm Dr. T.C. Paul. Today we are going to learn UPSC history as lesson 7 part 2. Literary sources of indigenous history. In the primary sources has been talked in the other video. Today we are going to talk about secondary sources. There are 3 points are given. And the first point is historical writings, right? In that source, we find that books and articles by historians that analyze and interpret primary sources to reconstruct and explain historical events, right? Historical events, social structures, and cultural developments, right? And historical writings on that basis we find that, I repeat, on books and articles by the historians that analyze and interpret the primary sources to reconstruct and explain about historical events, cultural developments and social structures. And the second point, that interpretation of oral traditions. Well, friends, scholarly works that analyze and contextualize oral traditions, make them accessible to a wider audience and provide historical analysis. Well, third one is biographies. The accounts of individual lives given on biographies based on primary sources like letters, diaries, and archival records. Well, once again I repeat, friends, this is in 3 ways given on secondary sources of indigenous history. Well, historical writings that is based on books and articles by historians that analyze and interpret primary sources to reconstruct and explain about historical events, cultural developments and social structures. Second one is an interpretation of oral tradition. Well, friends, that analyze and contextualize about oral traditions by making them accessible to a wider level of audience and provide historical analysis. Friends, third one, once again I repeat, the biographies that accounts of individuals' lives and based on primary sources like letters, diaries and archival records. Remember, these 3 points are given: historical writings, interpretations of oral traditions. Third one is biographies. In a nutshell, I do talk in terms of Hindi for understanding of these literary sources of indigenous history. इसमें आइए दोस्तों, लेसन 7 पार्ट 2 में साहित्यिक सूत्र का जो स्वदेशी इतिहास है वो बताया जाता है। सेकेंडरी सोर्सेस में क्या क्या है, जो 3 हैं: हिस्ट्रिकल राइटिंग्स, इतिहास के लेखन पर, राइट, जिसे बुक्स और आर्टिकल्स में पाया जाता है। आर्टिकल्स का मतलब अनुच्छेद, इतिहासकार द्वारा वो बताता है और व्याख्या करता है प्राइमरी सोर्सेस को रिकंस्ट्रक्ट करके और बता के ऐतिहासिक घटनाएं हैं, सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक ढांचे और कल्चरल डेवलपमेंट, जिसमें सांस्कृतिक उन्नतियाँ, तो ये चीज़ों में हिस्ट्रिकल राइटिंग्स में बताता है। सेकंड, इंटरप्रिटेशन ऑफ ओरल ट्रेडिशंस, जो व्याख्या करते हैं मौखिक मुंह के इतिहास बताने में। जैसे स्कॉलरली मतलब विद्यापूर्ण आदमी जो लेखन है वो विश्लेषण करता है, और कंटेक्चुअलाइज जो प्रासंगिक ओरल ट्रेडिशंस है ये एक्सेसिबल करता है, बताता है
बहुत ज़्यादा श्रोता को और देता है इतिहास का विश्लेषण। बायोग्राफीज में जो जीवन चरित्र है वह अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स लाइव्स का बारे में बताता है, अकाउंट्स देता है, और प्राइमरी सोर्सेस के ऊपर बता के, जिसमें लेटर्स है, डायरीज है और आर्कीवल रिकॉर्ड्स है, जिसमें अभिलेख संबंधी चीज़ को बताता है। यही हिंदी में हम लोग बात करते जब लिटरेरी सोर्सेस का बात आता है। और फ्रेंड, all these things have to be remembered. In the coming days, I will give you, chronological way of history prelims and mains together, in the forthcoming lessons. Thank you very much.